Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our CME sessions. Today it was regular, supposed to be delivered by our colleague Dr. Murad. He is not well today. Let's start with the common anomalies, development of face and neck and common anomalies. What is face basically? What is face? क्या है चेहरा? चेहरा क्या होता है? Face गाड़ी का चेहरा, इंसान का चेहरा, मलक का चेहरा. What is face? किस चीज़ को कहते हैं face? Presenting part of the body. Yes, ये है. This is a चेहरा, beautiful चेहरा. Another men भी beautiful होते हैं, सिर्फ औरतें beautiful नहीं होती हैं. Another beautiful face. What is face basically? It is outward appearance. आपकी बाहर की ज़ाहिर, ठीक है ना? The aspect of something that is perceptible or obvious upon superficial examination. इसको भी आप face कहते हैं. In human beings, face. What is face? It is the front part of head that starts from chin to forehead that contains eyes, nose, and mouth. That is face. So, development of face, I will not go into details. It starts from 4th week, and in the different processes, it starts with frontal process and 2 lateral nasal processes. Mouth is developed by stomodium. Here you see, this is the frontal process, frontal prominence, 2 maxillary prominences, and 1 mandibular prominence. This is stomodium, mouth part. It is basically ectodermal derivative. Similarly, neck is developed by pharyngeal pouches and grooves. Here you again see further development of the face and neck after 24 days in embryogenesis. There is a stomodium, oropharyngeal membrane, and later on, and it is the lateral view. Again, further development, you can see here. Again, by the end of 4th week, fetus looks like this. चेहरा इस तरह का होता है इंसान का 4th week में. Later on, the eyes start to develop, nose starts to develop, neck pharyngeal pouches and grooves, they start to develop. Here you see further development of face. Further development of face will not go into details. It is beyond the scope of this lecture. It's a lengthy topic. Then proper development of face. Here you can see the frontonasal prominence that forms forehead and bridge of the nose, frontal and nasal bones. Frontonasal prominence, this part. The maxillary prominences, the lateral prominences that form upper cheek regions and most of the upper lip, maxilla, zygomatic bone, and secondary palate. Here you see the mandibular prominence that forms the 2 maxillary prominences. They fuse, they form chin, lower lip, and lower cheek regions, and mandible, this whole region. The lateral nasal prominences, they form the alae of the nose, and the medial nasal prominences, they fuse and form the intermaxillary segment. Similarly, the branchial and pharyngeal arches, they unite to make these grooves. These are pharyngeal arches. Internally, they are pharyngeal grooves. Pouches, they unite to form the whole neck region. Pharyngeal grooves, here you can see, they unite to form the whole neck region and the thyroid, parathyroid, and neck muscles. Again, further development. So, what are the during this development process के दौरान कोई भी एबनॉर्मलिटी रह जाए तो वो छोटी से छोटी भी एनॉमली हो सकती है या बिगर एनॉमली हो सकती है फेस के अंदर. और फेस चूँकि फ्रंट पार्ट होता है, सबसे पहले नज़र आता है, नेकेट होता है, तो इसकी छोटी से छोटी एनॉमली भी वाज़े होकर नज़र आ जाती है.
तो इसलिए जब भी बच्चे की बर्थ होती है तो माएँ सबसे पहले क्या देखती हैं, बच्चे को टटोल के देखती हैं कि ये नॉर्मल है कि कोई एनोमली तो नहीं है। ये अल्लाह का एक बड़ा करम होता है कि बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और किसी एनोमली के बगैर पैदा हो। तो द फ्यू कॉमन अनोमलीज ऑफ द फेस, हेयर यू कैन सी अ क्यूट गर्ल, कितनी प्यारी बच्ची है। इनमें माइनर साइक डिफेक्ट अंडर रह गया है, क्या है, माइक्रोग्रेनेथिया, ये छोटी सी है, थोड़ी सी चिन, लोअर चिन। आप कहें तो ये किसी लिहाज से छोटी नहीं है। तो फ्यू सम फेशियल एनोमलीज दे आर करेक्टेबल, सम दे आर नॉट करेक्टेबल, सम दे नीड करेक्शन, सब दे डू नॉट नीड करेक्शन। अब जैसे है ये है, इसे ये करेक्टेबल भी नहीं है, इट डजंट नीड करेक्शन। हाउएवर देयर इज वन अनोमली दैट इज माइक्रोग्रेनेथिया। ओके, माइक्रोग्रेनेथिया जैसे ये है, बहुत से लोगों में होता है ये। इसको आप कहें तो ये लुक्स लाइक नॉर्मल, इट लुक्स लाइक नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल, बट दिस चिन इज़ लार्जर ये, इनको हम कहेंगे मैक्रो। इसका ऑपोजिट है माइक्रोस्टोमिया, मुँह छोटा हो जाना। छोटा बात बच्चों के बहुत मुँह स्मॉलर होते हैं ये। प्रोप्टोसिस ऑफ आइज़, ये देखें कैसे बहुत से बच्चों के हाइपरथायराइड मदर्स हों या बेबी में हाइपरथायराइडिज्म हो तो इसमें प्रोप्टोसिस हो जाती है, आइज़ को प्रोट्रूट हो जाती हैं। इट में भी यूनिलेटरल और इट में भी बायलेटरल। हियर कैन सी फेशियल पाल्सी, कंजेनिटल फेशियल पाल्सी, के राइट फेशियल पाल्सी है बोथ बेबीज़ की। दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ माउथ इज डेविएटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। आई विल रिमेन ओपन, और इसके मल्टीपल इश्यूज होते हैं। हाइपो इसका मसल हाइपो हेमी डेवलप होते हैं। These are the facial cleft anomalies. They are very common. Facial cleft anomalies. It may cleft lip. It may be a cleft lip. It may be a cleft palate. Both unilateral or bilateral. Here you see small upper lip median cleft anomaly. यहाँ से जैसे जुड़ा नहीं है। Small upper lip unilateral median cleft lip. Median cleft lip anomaly. This is unilateral left-sided cleft lip. This is bilateral cleft lip. Here again you see this is unilateral left-sided cleft lip. Again, this is a big anomaly, oblique facial cleft anomaly. ये पूरा यहाँ से आई तक ये सारा का सारा फ्यूज़ नहीं होता है। जैसे लेटरल और इनका जब फ्यूज़ हो रहे थे आपस में तो ये फ्यूज़ नहीं हुआ थी। ओब्लिक फेशियल क्लेफ्ट अनोमली, दिस इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोथ, लेफ्ट साइडेड क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट अनोमली। दिस इज बायलेटरल क्लेफ्ट लिप अनोमली, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप अनोमली। There is another anomaly, I will tell in later on. This is upper median cleft lip anomaly. This is median lower lip cleft lip anomaly. This is bilateral oblique facial cleft lip with bilateral cleft lip. Facial cleft with bilateral cleft lip anomaly. This is macrostomia. This is single nostril. Single nostril. बाज़ लोगों की सिंपल सिर्फ एक होती है, नाक के अंदर जो बीच में हड्डियाँ नहीं होती हैं तो एक ही सुराख होता है। देखें ये ब्यूटीफुल बेबी, नोज़ भी ठीक लेकिन सिंगल है। दिस इज बाइफिड नोज़, बाइफिड नोज़, नोज़ दरमियान से स्प्लिट हुआ है। दिस मैक्रोस्टोमिया, एक स्मॉल माइक्रोस्टोमिया था, दिस मैक्रोस्टोमिया। यू सी माउथ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। These are congenital pits, lip pits. These are commissural lip pits, lateral pits. Similarly, there are anomalies of neck region. You see Pierre-Robin syndrome, smaller mandible,
cleft palate and eyes and ears, they are also deformed. This is Pierre-Robinson syndrome. These are branchial cyst anomalies. Branchial cyst anomalies like lateral cervical sinus, external branchial sinuses and internal branchial sinuses. This is branchial fistula, lateral branchial fistula. It runs between internal and external carotids. It is the remnant part of persistent second branchial groove. This is congenital torticollis. बहुत से बच्चे आते हैं, लोग फ़ौरन अल्ट्रासाउंड, MRI, ट्यूमर कहते हैं. This is a misnomer, sternomastoid tumor. Sternomastoid tumor, easily detectable. You see after a week, baby develops a small lump here. ये lymph node नहीं होता, लोग फ़ौरन अल्ट्रासाउंड और कराते हैं. It increases with the age of up to 1 year or 2 years. It needs simple exercises. Simple exercise. If it remains later on, or it starts developing difficulty in neck movements or looks ugly, then we do surgery. Tenotomies. Sternomastoid tenotomies with the release of all the carotid sheath. Again, इस तरह के बच्चे बहुत आपको बाज़ार में नज़र आएंगे. Cystic hygroma. Cystic hygroma, basically lymphatic anomaly, collection of lymphatic tissue. It needs either surgery or sclerotherapy. Then the thyroid and parathyroid anomalies. Here you see thyroglossal cyst. It may be a thyroglossal cyst, it may be a thyroglossal, later on it may develop thyroglossal sinus or fistula. This is ectopic thyroid. Lingual thyroid, it may be a lingual thyroid, it may be an ectopic thyroid, it may be accessory thyroid. तीनों हो सकते हैं. नॉर्मल थायराइड के प्रेजेंस में हो तो एक्सेसरी कहेंगे, नॉर्मल थायराइड नहीं हो तो ये एक्टोपिक थायराइड होगा. हियर यू सी, क्योंकि थायराइड डेवलप यहीं से होता है. दिस इज अनदर लिंगुअल थायराइड. There may be ectopic parathyroid glands. Sometimes all parathyroid glands, they are absent. Then the anomalies of tongue, ज़बान. Bifidula, बहुत से बच्चों में होते हैं bifidula. It needs surgery, क्योंकि इसमें वॉइस का डिफेक्ट होता है, इसलिए इसको हम सर्जरी करते हैं, इसको फ्यूज़ करते हैं, सर्जरी में फ्यूज़ करते हैं. एग्लॉसिया, इस बच्चे को देखें, देयर इज़ नो टंग, ज़बान ही नहीं है इसकी. देयर इज़ नो टंग. इसको क्या करेंगे? कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी, करते हैं. हाँ, माइक्रोग्लोसिया, छोटी सी ज़बान, ये देखें, फ्लैप्स लेते हैं. माइक्रोग्लोसिया, छोटी सी ज़बान. कितना अच्छा होता है, और लेडीज़ की ना माइक्रोग्लोसिया हो जाता है, छोटी छोटी ज़बानें होती हैं. Macroglosia. See, usually hypothyroid and cretin babies, they have macroglosia. Bifid tongue, ज़बान दरमियान से दो हुई है. Fissural tongue, बहुत से लोगों के इस तरह के ड्यू टू मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन कॉन्जेनिटल भी होती हैं. Hairy tongue. You see hair, lot of hair, black hairy. Again, it may be due to medication or congenital. वही मैं कहा ना, इसका congenital, it may be congenital. एप्स्टीन बार वायरस मदर को तो हो जाएगा ना, ऐसे ही है. एनकाइलोग्लोसिया, जिसको हम टंग टाई बोलते हैं, बच्चे ले आते हैं कि इसको आप रिलीज़ करें. एनकाइलोग्लोसिया, इसका है कि इसका स्पीच डिफ़िकल्टी में इसका कोई रोल नहीं है.
हाँ, ये कहते हैं ना बच्चे इसकी वजह से नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिंपल सिर्फ इसलिए 2 वजह से करना है। एक उनका फियर होता है मदर्स का, एक दूसरा अगर इफ़ देर इज़ जेन्युइन एनकाइलोग्लोसिया, यहाँ फाइब्रोटिक बेन हो, लार्ज फाइब्रोटिक बेन हो, देन यू डू रिलीज, अदरवाइज बिल्कुल ना छेड़े। म्यूकोसील रिटेंशन सिस्ट, दीज आर रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप और ओरल कैविटी। बस ये छोटी सी स्लाइड लेते हैं तो